गाइस वेलकम बैक। और आई होप कि मेरी आवाज़ भी बिल्कुल सही से आ रही होगी एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और लाइव थे ही हम, आई गेस हम लाइव थे प्रोबेबली। हाँ चलो खैर। तो इन दिस वीडियो, इन दिस लाइव स्ट्रीम, वी ऑल नो कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्या करेंगे। इट ऑब्वियसली इज़ अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं रियल मैड्रिड की जर्सी पहन के बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं यूनाइटेड की बात नहीं करूँगा। जो थंबनेल मैंने लगाया था उसके बाद मैंने अपने क्या बोलते हैं सूट चेंज करने का मैंने सोचा नहीं। तो अल्टीमेटली ये सीन था। तो अब अगर हम बात करते हैं आंद्रे ओनाना की, सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैं ट्विटर भी खोलूँगा थोड़ी देर में, तो उसके ऊपर भी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। सबसे पहले अगर हम आंद्रे ओनाना की बात करें तो आंद्रे ओनाना इज़ अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, वी ऑल नो। उसका बहुत बोल रहे थे कि यार इट वुड बी अ फ्लाइट डिले होगी, कुछ होगा, सिनेरियो बनेगा, इट वुड बी लाइक दिस कि मतलब थोड़ा सा मतलब उसकी फ्लाइट डिले हो रही है और वो ही नॉट बी कमिंग टू यूनाइटेड एज पर द शेड्यूल, जो कि शेड्यूल बना हुआ है। एंड वो थोड़ा सा लेट होगा। और ऑब्वियसली आज उसने एक फेयरवेल मैसेज भी डाल दिया अपने इंस्टाग्राम पे। एंड अगर होता है तो मैं आपको शो भी कर देता हूँ। तो उसने मतलब मैंने खुद ने भी नहीं पढ़ा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने भी नहीं पढ़ा है। लेकिन एक मिनट, आंद्रे ओनाना ये हमने सर्च किया और मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दूं। स्क्रीन शेयर कैसे होती है मुझे नहीं आती वैसे, लेकिन एक मिनट, शेयर स्क्रीन से आ जाएगी। लुक फॉर द, सही है। तो ये हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है। और अब अगर हम देखें तो ऑफिशियल अनाउंस द साइनिंग, सही है। चलो पढ़ते हैं, ये पढ़ लेते हैं पहले। I've never imagined that a farewell would be so hard. A year ago, I became an Arazurio. Many people told me that this club and this city had something special. People told me that this club and this city, अच्छा दो बार लिखा हुआ है. Now I confirm it. In my first days as a Nerazzurro, I realized that this is a family, that being interesting is a way of understanding life. I fell in love with San Siro, La Curva and the city. San Siro, as you all know, कि अभी abolish होने वाला है San Siro at this इस सीजन के बाद। ये कुछ इस तरह सिनेरियो था कि अबॉलिश हो जाएगा और अब अपने अपने स्टेडियम्स के ऊपर दोनों टीम्स खेलेंगी। नाउ द सर्कमस्टांसेस आर राइट फॉर मी टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी इन मैनचेस्टर। एंड उन्होंने ये एक्सप्रेस कर दिया अपना, आई डू इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म, but knowing that I will miss you. Eternal gratitude to all the interest you make this club great. Maybe one day our paths will cross again, but now it's time to face the new challenges and cheer again. Players come and go, और जो भी उसने आगे बोला। तो अल्टीमेटली अब इज हेयर और वो आ चुका है प्रोबेबली। ही इज हेयर। आंद्रे ओनाना की शर्ट भी वो हो रही है। तो अब अगर मैं अपनी थोड़ी देर स्क्रीन शेयर बंद करूं एंड अगर उस पर हम बात करें, सबसे पहले बैंग बैंग शॉर्ट्स। ओ हेलो भाई, हेलो हेलो। आई होप यू आर फाइन। और काफ़ी टाइम बाद आपसे भी मेरी मुलाकात हो रही है। इन माय ओपिनियन आंद्रे ओनाना इज़ एन ओवर रेटेड जीके। यार ओवर रेटेड मेरे हिसाब से नहीं है। मैं आपको भी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। एंड श्रेय भाई इज़ विद अस। हेलो श्रेय भाई, हाउ आर यू? एंड बिग अप्स टू यू। इनके भी चैनल को सब चेकआउट करें, श्रेय FC। ही हैज़ ग्रेट कंटेंट, मतलब चेल्सी का आपको एवरीथिंग यूड गेट ऑन हिज चैनल। एंड ही इज़ रियली रियली गुड। और इनका जो एक एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है श्रेय भाई की, वो यही है कि मैं ज़्यादा बटर पॉलिशिंग नहीं करूँगा, लेकिन उनकी ये चीज़ ये बहुत अच्छी लगती है कि अच्छे से वो ग्रीट करते हैं सबको, अपने ऑडियंस को अच्छे से ग्रीट करते हैं। दैट इज़ व्हाट के मतलब मेक्स हिम डिफरेंट टू एवरी अदर यूट्यूबर आई हैव मेट, और जिनके साथ मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम की है। तो थैंक यू श्रेय भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। ओनाना विल ट्रांसफॉर्म मैनचेस्टर यूनाइटेड, या ये तो मैं पॉइंट एड्रेस करने ही वाला था कि आंद्रे ओनाना, मैंने अपनी एक वीडियो भी स्पेशली इसके लिए बनाई थी आंद्रे ओनाना के ऊपर के हाउ ही विल ट्रांसफर मैनचेस्टर यूनाइटेड।
देहेया से ही इज वे टू बेटर। अगर बैंग शॉट्स भाई आपके इस कमेंट का अगर मैं लूं इसको कमेंट, आप अगर कह रहे हो कि ओवररेटेड जीके, देखो इंग्लिश बायस जो है ना, ये है कि थोड़ा सा इंग्लिश बायस ज्यादा बन जाता है। एंड ऑब्वियसली अगर तो कोई भी अगर प्लेयर इंग्लैंड में आएगा और कोई भी अगर प्लेयर स्पेन में आएगा तो इट वुड बी अ डिफरेंस। मतलब अगर हम इसके ऊपर बात करें तो जो इंग्लिश फैन बेस है ना, अगर हम इंग्लिश फैन बेस नहीं है, वी आर नॉट इंग्लिश फैन बेस, हम एशियन फैन बेस है, तो हम इतना ओवर हाइप नहीं करेंगे अपने प्लेयर्स को। लेकिन इंग्लिश फैन बेसिस जो है ना, वो ओवर हाइप करने की माहिर हैं। वी हैव सीन द फैक्ट कि हर प्लेयर को ओवर हाइप किया जाता है, इंग्लिश जो भी जेम्स होते हैं उनको। लेकिन ये एक इंग्लिश प्लेयर नहीं है आंद्रे ओनाना, बट यूनाइटेड में आ रहा है तो ऑब्वियसली इज वेरी वेरी गुड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार ओवर रेटेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि उनकी पहले परफॉर्मेंसेस आपने देखी नहीं है। ही हैज बीन की फॉर इंटर इन द लास्ट फ्यू इन द लास्ट ईयर, एक ही साल उन्होंने खेला है। एंड एरिक टेन हैग के साथ अगर उनका कनेक्शन है तो मैं उनको ओवररेटेड नहीं बोलूंगा। एरिक टेन हैग अगर किसी को चाहते थे कि अच्छे से मैं उस कीपर को मैं लाऊं अपने पास, तो ऑब्वियसली एक अपग्रेड तो सबसे बड़ी चीज मैं जिसके ऊपर कन्विंस्ड हूं ना, वो अपग्रेड है। भले वो कुछ भी करे यार, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि देहेया इज आवर लेजेंड, और मैं उनकी अच्छे से बिल्कुल मैं उनकी तारीफ करूंगा। I'd have all my respect for him. लेकिन at this point of time I was not convinced with De Gea, and every United fan, भले यार अगर आप ये पेट्रोटिज्म दिखाओ अपना थोड़ा सा कि लेजेंड्स है हमारा तो इसको लेजेंड को रहने दो एक साल के लिए भी, तो ऑब्वियसली दिस वोंट मीन कि मतलब यार अब डेहेया को आप स्टे करवाओगे अपने क्लब में। डेहेया अपनी एज से ऊपर जा चुके थे। ऑब्वियसली 31 एज नहीं है गोलकीपर की, लेकिन एक बोलते हैं कि यार आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है। जब हमने रोनाल्डो को हटाया फॉर रैशफोर्ड को हमने आगे लेके आया, जब रैशफोर्ड को हमने अपना स्ट्राइकर बनाया, एंड ऑब्वियसली तो रोनाल्डो को हटाने का मतलब ये था कि टेन हैग वाज ट्रांसफॉर्मिंग यूनाइटेड। टेन हैग वांटेड कि अब मैं अपनी अपनी फिलोसफी यूनाइटेड में लाऊंगा। मैं वो यूनाइटेड नहीं देखना चाहता कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स को टारगेट करती है, जो कि अपने लेजेंड्स को लंबे अरसे तक टाइम देती है, जो कि अपने लेजेंड्स को सही टाइम पर उनको करेक्टली उनको फेयरवेल गुड बाय नहीं देती। तो अल्टीमेटली टेन हैग वांटेड दिस टू हैपन। और श्रेय भाई के कमेंट्स आए हैं तो देख लेते हैं। अरे ना ब्रो, यू आर अ जेम एज वेल, थैंक यू भाई, थैंक यू। Sweeping keeping is very important, and Manchester United can easily build from the back, which sadly wasn't having. Yeah, that is my point. United ने 7 जो मैं अपना एक यही आपका पॉइंट ही एड्रेस करता हूँ। इसमें यूनाइटेड डेविड डेहिया ने 7 लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्ट की थी इन द फर्स्ट गेम वीक ऑफ द सीजन, जो कि हमारा था आई गेस ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, जिसमें 4-0 टेल दिए गए थे सही से। तो 4-0 वाले आई गेस 4-0 वाला पहला मैच था या ब्राइटन वाला था, आई डोंट नो, लेकिन दोनों में 7 लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्ट की। दिस शोड के एरिक टेन हैग वाज वांटिंग De Gea टू ट्राई एंड गेट ऑन। मतलब यही वाले जो कनेक्शंस बनाते हैं, मतलब आप जो बोल रहे हो कि बिल्डअप फ्रॉम द बैक है, बिल्डअप फ्रॉम द बैक बनाने के लिए डेविड डेहिया को उन्होंने कन्विंस किया था। उन्होंने उसको बोला था कि इंस्ट्रक्ट किया था कि आप बिल्डअप फ्रॉम द बैक करोगे, एंड अल्टीमेटली डेविड डेहिया नहीं कर पाया। जो हमने देखा, जो एक सेकंड गोल जो पड़ा था लिसांद्रो मार्टिनेज को पास करने के लिए गए थे डेविड डेहिया इन दैट ब्रेंटफोर्ड मैच, या पता नहीं किसको पास करने के लिए, लेकिन वो जो गोल पड़ा था बिल्कुल करीब से गोल आ गया था। डेविड डेहिया ने स्वीपिंग कीपिंग की बिल्कुल घटिया बिल्कुल स्वीपिंग कीपिंग की थी उस मैचेस में जो दोनों थे। उसके बाद जो लॉन्ग बॉल्स की जो आपकी अमाउंट थी वो बढ़ती गई थी। लिवरपूल वाले मैच में आई गेस 23 थी, 13 थी, और साउथहैम्पटन की मैच में 23 थी। उसके बाद एक और मैच में 17 या 20 कुछ प्रॉब्ली ऐसे थे। तो अल्टीमेटली दैट शोड कि टेन हैग हैज अबॉलिश्ड हिज सिस्टम कि बिल्डअप फ्रॉम द बैक हमें नहीं करना। एंड इन द फेस ऑफ आंद्रे ओनाना, अगर आपका गोलकीपर आंद्रे ओनाना है तो यू वुड बी बिल्डिंग फ्रॉम द बैक। इंटर का इतना लो ब्लॉक होने के बावजूद अगर वो बंदा इतनी अच्छी गोलकीपिंग कर रहा है, इतना अच्छा सब कुछ कर रहा है, तो अल्टीमेटली दिस शोड के आप नहीं कह सकते यार। मतलब उन्होंने इंटर के लिए 7 चैंपियंस लीग मैचेस में आई गेस कितने कम गोल्स खाए, मैं देख के बताता हूँ कितने इंटर ने। एक मिनट, इंटर चैंपियंस लीग 2023 हम देख लेते हैं कितने गोल्स खाए थे इंटर ने। मैं देख के बताता हूँ तभी मुझे समझ में आएगा कि यार चैंपियंस लीग में उन्होंने क्या किया है, और फिर मैं लीग में ही बताऊंगा। तो बैंग बैंग शॉट भाई का कमेंट था, और एग्जैक्टली विद मॉडर्न टाइम टीम्स नीड टू इवॉल्व विद De Gea, यूनाइटेड कुड नॉट मूव फॉरवर्ड। दैट इज द पॉइंट, दैट इज ट्रूली द बेस्ट पॉइंट इन माय ओपिनियन। और एक मिनट यार, स्टैंडिंग्स देख लेते हैं यार, एक मिनट खुल जा। तो इंटर ने
कितने आई गेस 3 गोल्स कंसीड, अच्छा 10 गोल मारे हैं, अच्छा 7 गोल कंसीड किए हैं, इसके बावजूद 7 गोल कंसीड किए कि आंद्रे ओनाना डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना अच्छा गोलकीपर है, लेकिन उन्होंने 7 गोल कंसीड किए। दिस शोड कि इंटर का डिफेंस बहुत वनरेबल था। अगेंस्ट बायर्न भी उन्होंने कंसीड किए थे, बार्सिलोना के अगेंस्ट उन्होंने क्लीन शीट्स रखी थी प्रॉब्ली इन माय ओपिनियन, लेकिन अगेंस्ट बायर्न उन्होंने गोल खाए थे, सही है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं, एक मिनट रुको यार, देख लेते हैं, कोई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा इंटर मिलान का पूरा सीजन देख लेते हैं, या हम्म, छोड़ो यार, अभी क्या देख के कर लेंगे। तो अल्टीमेटली अगर इस पे वही जो पॉइंट है कि आंद्रे ओनाना आपकी स्वीपिंग कीपिंग की बहुत अच्छी कर सकता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली, यही थी कि यार आपको क्रॉस इंटरसेप्शन बहुत अच्छी करके देगा। 6.1% आंद्रे ओनाना की क्रॉस ड्रॉपिंग है, क्रॉस ड्रॉपिंग और क्रॉस इंटरसेप्टिंग द थिंग यू वुड से, जो आपको कहनी है कह लो। लेकिन यही क्रॉस इंटरसेप्ट करने का, और इन्हीं क्रॉसेस को इंटरसेप्ट करके ही eventually form them into counter attacks. जिस सिचुएशन में यूनाइटेड, एवरी टाइम यूनाइटेड गेट कॉट इन द सिचुएशन ऑफ काउंटर ऑफ डिफेंसिव वनरेबिलिटीज, जो कि कैसेमीरो के साथ भी हमने देखी है। भले ही हमारा डिफेंस जितना भी अच्छा हो जाए, मिडफील्ड जितनी भी अच्छी हो जाए, यूनाइटेड इज अ टीम कि वो कंसीड, मतलब यार कंसीड करने के टाइम पे तो कंसीड करके ही रहती है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो डेविड डेहेया आते थे, डेविड डेहेया सेव करते थे। इन माय ओपिनियन डेविड डेहेया स्टिल इज probably one of the best short stoppers in the world currently यार, on his given day। मैं on his given day भी mention करूंगा, क्योंकि यार डेविड डेहेया इन द गेम अगेंस्ट एस्टन विला, प्रोबेबली मुझे याद नहीं है एस्टन विला था, वेस्ट हैम के अगेंस्ट उसने 1-0 का जो यूनाइटेड डिफीट अभी खेली थी, अभी ये मई में था, आई गेस मई के अंदर मैच था। तो उसके अंदर भी डेविड डेहेया ने एक बहुत ही वनरेबल मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से ही यूनाइटेड ने गोल कंसीड किया था। एंड दैट मेंट कि यूनाइटेड के शोल्डर्स गिर गए एंड यूनाइटेड वुड नेवर स्कोर अ गोल इन दैट मैच। तो अल्टीमेटली इसी से पता लगता है, अगर आपका गोलकीपर ही आपको बिल्डअप फ्रॉम द बैक करने का अलाउ नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली इट डजंट मेक सेंस फॉर एट ऑल, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल कि आप बिल्डअप नहीं कर पा रहे। इवॉल्व आपको मॉडर्न टाइप के हिसाब से आपको करना ही पड़ता है अल्टीमेटली, क्योंकि आपके पास, अगर आपको compete करना है विद द लाइक्स ऑफ लिवरपूल, विद द लाइक्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी, जो कि इस टाइम पर दे हैव प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। अगर हम देखें ना, तो दोनों ब्राजीलियंस हैं और दोनों को कंपटीशन है। एलिसन स्टार्ट्स अबव एडरसन, हु इज अ गोलकीपर ऑफ मैनचेस्टर सिटी, लेकिन एडरसन एलिसन दोनों ही क्लासिक गोलकीपर्स हैं ब्राजील के, दोनों ही स्टार्टर्स हैं अनडिस्प्यूटेड, कि अगर उनको रोटेशनल जो भी खिलाना चाहे यार उनका जो भी है ब्राजील का, लेकिन they're very good goalkeepers. Jordan Pickford is a very good keeper for Everton. Agar United would not have gone for Andre Onana, they might have gone for Jordan Pickford. Jordan Pickford की भी जो आप अगर मानते हो इस चीज को, I've seen the fact कि Aaron Ramsdale, in my opinion, sorry Arsenal fans, but he's a bit overrated for me. He's not that kind of a guy. मुझे उसका जिस तरह उसकी हाइप बनी फिरती है, I don't think कि वो उस तरह डिलीवर कर पाए अपनी हाइप पर अभी। एंड जॉर्डन पिकफोर्ड हैज स्लोली एंड ग्रेजुअली पिक्ड अप हिज स्पॉट, इंग्लैंड का फर्स्ट स्पॉट उसने ले लिया अपने पास ही। एंड अल्टीमेटली आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एज वेल, जॉर्डन पिकफोर्ड को कोई अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर है, कोई हटा नहीं पाएगा इसको अल्टीमेटली, इन माय ओपिनियन। तो यार थोड़ा सा आई एम स्वेटिंग, सो आई नीड टू wipe myself out because there is no AC in this room and my fan is also closed. तो यही जो हम बात कर रहे थे कि अगर यूनाइटेड नहीं जाती फॉर आंद्रे ओनाना, तो अल्टीमेटली यही होता कि यार जॉर्डन पिकफोर्ड के लिए जाती। इन माय ओपिनियन अगर जाती भी, तो आई वुड हैव बीन वन ऑफ दोस सपोर्टर्स कि यार यस आई सपोर्ट दिस डिसीजन ऑफ जॉर्डन पिकफोर्ड, कि जॉर्डन पिकफोर्ड के लिए यूनाइटेड जा रही है। ही कैन बिल्ड अप फ्रॉम द बैक, लेफ्ट फुटेड गोलकीपर है। तो अल्टीमेटली द पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अगर आंद्रे ओनाना की स्टोरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो यही बनता है कि आंद्रे ओनाना is way better than David De Gea. I don't know what does it feels to you, even as a United fan as well. I really feel like that. I know David De Gea has been disrespected, has not been given a proper farewell he would have been given. अगर टेन हैग को, मैं इस बात में तो बिल्कुल कहूंगा कि if Ten Hag knew that he is changing a goalkeeper, he is going for after Andre Onana, so he must have called on David De Gea. He must have
repeatedly said to him that you will not be signing a new contract. उनको end तक आपने इस चीज के ऊपर ही रखा कि we will be signing a contract with you, you will be a United player in the next season as well, you will be our number one goalkeeper. बट आपने उनको जून में आके बताया कि you will not be number one goalkeeper of United and we are going after a goalkeeper, will not be agreeing a contract with you. And then suddenly a news comes out that David De Gea will no longer stay at Manchester United and it's a goodbye from David De Gea to the club. And David De Gea ने बीच में एक काफी इंटरेस्टिंग सा इमोजी बनाया था यॉर्निंग वाला, जिसमें डेविड डे गेया ने यही कन्वे किया था कि मैं आई एम वेटिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफर। यूनाइटेड ने तैयार भी कर ली थी, बट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ डेविड एरिक टेन हैग एंड एवरीथिंग, उनकी मीटिंग कुछ भी हुई क्लब से, रिप्रेजेंटेटिव से, अपने ही जो उनका डिसीजन था वो फाइनलाइज यही किया गया कि डेविड डे गेया वुड नॉट बी आवर स्टार्टर। एंड इन माय ओपिनियन आई सपोर्ट दिस डिसीजन डिस्पाइट द फैक्ट कि डेविड डे गेया विल गो डाउन एज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ यूनाइटेड। अगर ये रिस्पेक्ट यही वाली जो अगर रोनाल्डो को फेयरवेल, तो खैर रोनाल्डो का तो सिनेरियो ही अलग था, लेकिन ही आल्सो डिजर्व्ड अ फेयरवेल डिस्पाइट द फैक्ट कि यार इंटरव्यूज वगैरह वो तो सिचुएशन ही बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट रोनाल्डो को भी एक मिलना चाहिए था फेयरवेल इन माय ओपिनियन, डेविड डे गेया को भी मिलना चाहिए था इन माय ओपिनियन। तो आप अगर अपने दूसरी उसकी बात करें तो इट इज अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस, आवर न्यू कैप्टन, मैनचेस्टर यूनाइटेड के न्यू कैप्टन। और यार हमने तो देखा भाई, कोई ऐसा बात नहीं है कि ब्रूनो फर्नांडिस को हमने नहीं देखा अभी तक। ब्रूनो फर्नांडिस हैज बीन आवर कैप्टन पिछले पूरे सीजन ही हमने देखा है कि एरिक टेन हैग ने स्टार्ट उनको नहीं दिया था हैरी मैग्वायर को, तो अल्टीमेटली ब्रूनो फर्नांडिस वाज द वन जो कि स्टार्ट करते थे और ही वाज आवर कैप्टन एंड देयर वाज नो वे एनी अदर प्लेयर वुड बी आवर कैप्टन दिस सीजन जो भी है। एंड ब्रूनो फर्नांडिस, यार डेविड डे गेया ही मेरे मुंह में आ रहा है यार। सो ब्रूनो फर्नांडिस हमारे कैप्टन है, ब्रूनो फर्नांडिस भाई, ब्रूनो फर्नांडिस, हाँ कुछ अलग नहीं है, ब्रूनो फर्नांडिस है। तो भाई मैं इस पे क्या ओपिनियन क्या दूंगा, लेकिन आई थिंक ही हैज गॉट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज गॉट दैट talent in himself, he has got that leadership qualities I think Ten Hag found in him, and it is a really good decision to change the captain, and this suggests and this really feels like कि हैरी मैग्वायर का करियर एंड है यूनाइटेड में। आई थिंक दिस समर प्रोबेबली अगर नहीं जाता तो यार अपनी खुद ही इज्जत खो लेगा, ये अपनी रिस्पेक्ट खो देगा। इट्स नो वंडर के मैग्वायर देखो ऑफर के लिए तो जाना चाहता है, लेकिन यूनाइटेड ने अगर उसके लिए 50 मिलियन लगा दिए हैं उसका प्राइस टैग, तो इन माय ओपिनियन नो क्लब वुड बी दैट फुलिश कि वो पे करेंगे एक 50 मिलियन एक लायबिलिटी काइंड ऑफ अ डिफेंडर के लिए यार। इन माय ओपिनियन आई थिंक कोई भी बड़ा क्लब तो जाएगा नहीं मैग्वायर के लिए, सीइंग हिज परफॉर्मेंसेस, रीसेंट परफॉर्मेंसेस जो भी है। आई थिंक देखो मैग्वायर का भी सिनेरियो अगर बनाए हैं हम, अगर इसका ब्रेक डाउन करें तो मैग्वायर वाज अ वेरी गुड डिफेंडर एट लेस्टर सिटी, दैट इज व्हाई यूनाइटेड, हाँ ऑल्दो यूनाइटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैग्वायर को 2019 में लाए थे, 2020 में लाए थे यार, मैं सर्च कर लेता हूँ व्हेन वाज मैग्वायर साइंड फॉर यूनाइटेड, मैं भूल गया हूँ यार। आई थिंक लॉकडाउन से पहले किया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ देखो अगस्त में यूनाइटेड के लिए आया था, हाँ तो अल्टीमेटली अगस्त में ही आया ना, सही है। तो देख लो भाई, अब 19 के बाद से वो लेस्टर में तो अच्छा खेलता था, लेस्टर में आई हैव सीन हिज वीडियोस एज वेल, कि मैंने उस टाइम पे भी देखी थी जब ये था। तो आई थिंक कि मुझे देखो सबसे बड़ी चीज जो लगती है ना, वो एक प्रेशर लगता है यूनाइटेड का, एंड प्रेशर जो आपको खा जाता है यार यूनाइटेड का, तो थोड़ा होता है ना कि फैन बेस है, फिर आपको ग्लेजर्स का प्रेशर अलग होता है, और ऑब्वियसली ग्लेजर्स का उसको क्यों आएगा यार, उसको क्यों आएगा ग्लेजर्स का प्रेशर, उसको मैनेजरियल उसका आएगा। चलो अल्टीमेटली जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं यूनाइटेड फैंस की फ्रॉम देयर प्लेयर्स, आई थिंक आफ्टर द departure, after those retirements of Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, and I think ये जो इनकी जो कमी थी ना, वो यूनाइटेड को आज तक महसूस होती थी। एंड लास्ट सीजन मुझे ऐसा फील होता है, आई डोंट नो, आई विल नॉट बी कंपेयरिंग देम विद आवर करंट डिफेंडर्स, क्योंकि दे वर वे गुड। आई वाज नॉट दैट यंग, मैं तो आपको पता है मैं छोटा हूँ ऑब्वियसली, मैं इतना देखा नहीं मैंने उनको, लेकिन उनकी जो मैं देखता हूँ कि यार उनकी वीडियोस,
उनके स्टाइल ऑफ प्ले अल्टीमेटली तो बहुत अच्छा था. They were the goated defenders at that point of time. और मेरे हिसाब से लिसांड्रो मार्टिनेज और राफेल वरान की जो पार्टनरशिप है, that that meant के of Rio Ferdinand in my opinion. I might be wrong as well, I don't know at this point. लेकिन थोड़ा सा मेरा आई गेस नेट इशू किया है. मेरा नेट इशू किया नहीं, सही है, चलो चल रहा है, इट्स नो वंडर, सही चल रहा है. तो भाई मुझे जो फील हुआ ना कि यही मैंने अपनी जो आपको ओपिनियन बताया, मैंने तो यही बताया कि अल्टीमेटली फिर हैरी मैग्वायर के ऊपर अगर आए तो हैरी मैग्वायर अपने ना उसने अपनी अपनी हाइप के ऊपर वो बन नहीं पाया. एंड अल्टीमेटली इट्स नो वंडर के एक्सपेक्टेशंस तो मार गई उसको, लेकिन जो उसकी फी की भी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, दैट वाज आल्सो वरिंग फॉर हिम एज वेल. कि जितने ही बड़े बड़े प्लेयर, जितने भी प्लेयर्स होते हैं ना, यंग प्लेयर्स होते हैं, उनको जब आप लाते हो अपने क्लब में एंड अल्टीमेटली यू यू पुट अप मतलब इतनी बड़ी आप साइनिंग फी उसके लिए ले आते हो, जो भी प्लेयर होता है उसको उस साइनिंग फी पे लाते हो, तो अल्टीमेटली इट सीम्स लाइक कि उनको यही फील होता है कि यार हम वैल्यूएबल बहुत ज़्यादा हैं. एंड वैल्यू पता लगवानी पड़ती है आपको. वैल्यू आप ऐसे नहीं बना सकते. यू हैव टू मेक योर वैल्यू बाय योर सेल्फ. एंड दे डोंट रियली लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फैन बेसेस एज वेल. देखो, जॉ फिलिक्स की एक एग्जांपल दूंगा मैं. जॉ फिलिक्स 106 कितने मिलियन के लेके आए थे, 110 120 मिलियन कितने का आई डोंट नो, लेकिन वो इतने का ही लाई थी एटलेटिको मैड्रिड. एटलेटिको मैड्रिड इज दैट क्लब जो कि अटैकर्स के ऊपर तो इतना पैसा खर्च ही नहीं करती है. अटैकर्स तो इधर उधर से उठा के ले आते हैं. वो अपनी मिडफील्ड और अपनी डिफेंस को ज्यादा स्ट्रांग रखते हैं. कि जिस मतलब जो डिएगो सिमियोनी की स्ट्रेटजीज हैं यार, अटैकर्स तो वो एक दो अटैकर के साथ खेलते हैं, हराम बॉल हमेशा वो खिलाता है. ही हैजंट गॉट एनी फेयर. उनके पास ग्रीजमैन है, ऐसे प्लेयर्स उनके पास पड़े हुए हैं, सही है, तो वो अटैक पे खेल लेते हैं. लेकिन जॉ फिलिक्स के लिए खर्च किए तो दैट मेंट ना कि जॉ फिलिक्स कुछ ना कुछ करेगा, बट ही डिड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस. मेरे पास कितनी एग्जांपल दूंगा आपको. जेडन सैंचो यूनाइटेड में ही ले लो ना यार, एक और इंग्लिश प्लेयर. जेडन सैंचो ने क्या किया. सैंचो डिड नॉट डिड एनीथिंग. मतलब 2 सीजन अभी गुजर गए. थर्ड सीजन इन माय ओपिनियन ही गॉट दैट ही नीड्स टू प्रूव इन दिस सीजन इफ ही वांट्स टू प्रूव हिज वर्थ. अगर उसको करनी है तो इसी सीजन. नेक्स्ट सीजन उसको चांस नहीं मिलने वाला. एंड इट्स रियली रियली ट्रू कि इस सीजन अगर नहीं किया तो अल्टीमेटली नेक्स्ट सीजन इज आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. कितने कौन क्लब इसको लेगा, कितने में लेगा, आई डोंट नो, लेकिन नेक्स्ट सीजन ही इज आउट अगर ये इस सीजन परफॉर्म नहीं करता जेडन सैंचो. तो अल्टीमेटली मगवायर की ये मैंने एग्जांपल आपको दी कि प्लेयर्स डोंट रियली लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस. और मगवायर ने अपना आपको खुद ही बर्बाद किया यार. मतलब मीम मटेरियल बन गया. अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसको. तो ये कुछ मेरी बातें थी. मैंने हैरी मैग्वायर के ऊपर बात की, अपने कैप्टन ब्रूनो पोर्चुगीज मैग्निफिको के ऊपर बात की, और आंद्रे ओनाना की साइनिंग के ऊपर. अब अगर अपन अपनी एक और उसके ऊपर बात करें तो इट्स अबाउट दैट गाय रास्मस हॉयलैंड. रास्मस हॉयलैंड, वी ऑल नो ही इज अ वेरी वेरी यंग स्ट्राइकर. 20 years old है, 21 years old है, आई डोंट नो इसकी एज पता कर लेते हैं. का क्या नाम है, रास्मस होइजलैंड. डेनिश प्लेयर है भाई, डेनमार्क का प्लेयर है भाई. अपना अपना लौंडा बहुत सेक्सी है यार. 20 साल का है भाई. और एर्लिंग हालैंड से एक सेंटीमीटर छोटा है कुछ इस तरह, मैंने ये पढ़ा था भाई. वो खुद छोटा है भाई वो. तो लेकिन यह टक्कर अच्छी होगी. यूनाइटेड के पास एक लंबा कदावर अटैकर आ रहा है भाई. आफ्टर ऑल द डेज ऑफ एंथनी मार्शियल भाई, पता नहीं क्या करता था वो. तो हर बार इंजर्ड ही हो जाता है यार. इतना इतना सेंसिटिव कोई बंदा आई हैव नेवर सीन अ प्लेयर है कि इतना सेंसिटिव कोई हो सकता है. मैंने अपनी जितनी लाइफ में गुजारा है ना, आई हैव नेवर सीन हिम के थोड़ा मतलब बहुत बहुत लिथार्जिक बंदा है यार. वो बॉल के ऊपर आता है एंड ही फील्स लाइक अब मैं क्या करूं, थक गया भाई. 50 मिनट होते नहीं है गेम में, वो थक जाता है यार. इससे ज्यादा तो मैं खेल लूं यार, इससे ज्यादा तो मैं खेल लेता हूँ यार. कितना दुबला पतला हूं मैं, लेकिन एनर्जी है भाई, खेल लेते हैं यार. पैशन है, पैशन के लिए खेलते हैं भाई. ये तो बंदा इंजर्ड ही रहता है. लेकिन रास्मस हॉलैंड की बात कर लेते हैं यार. किसी और की मुझे बात नहीं करनी. तो रास्मस हॉलैंड, अब हमें पता है कि यार एटलांटा फीस मांगेगी उसके लिए एंड यूनाइटेड शुड पे दिस. अगर नहीं पे की तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, थैंगा. यूनाइटेड नहीं साइन कर पाएगी. In a meeting last night, Atlanta coach Jan Piero Gasperini asked for a solution to the Rasmus Hojlund situation in 10 days. Alfredo Pedola की रिपोर्ट है भाई ये.
और कौन है भाई, कोई अच्छी डील आए यार, कोई अच्छी मतलब पता लगे। अच्छा हाँ, फब्रिजियो की भी रिपोर्ट आई थी ना, सही है, तो कंफर्म उसी ने कर दिया ना, फब्रिजियो की रिपोर्ट आई थी। तो फैब्रिजियो हिमसेल्फ हैज सेड कि यूनाइटेड जा रही है रेस्मस हॉलैंड के लिए, और रेस्मस हॉलैंड की डील के लिए यूनाइटेड वुड नॉट इवेंचुअली स्पीक इंग्लिश, प्रेशियस चक्स। ओके ब्रो, ओके, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। So United will go for Rasmus Hojlund as confirmed by Fabrizio Romano, and will go not. They will bid for Rasmus Hojlund in the next few days in the to avoid the conflict with PSG, because PSG are keeping a tab open on Rasmus Hojlund in case Mbappe leaves, and they are preparing that Mbappe saga to end, because they want an answer. Nasser Khalifi has said it clearly that club is more important than players, and he's specified the fact that Kylian Mbappe, if he wants to leave, he has not directly conveyed this message to Mbappe because he's not met, and there are contradicting reports. But I have gone to the different scenario. But let's come to Rasmus Hojlund. Then I will talk about Kylian Mbappe, because I want to talk about him as well. So Rasmus Hojlund, I think 60 million is a deal which might be a possibility, and Atlanta are asking for a 70 million, which they might sit down for 60 million fee, and precious chucks. Okay, brother. Let me know from where are you, bro. And so ultimately, back to Rasmus Hojlund, and I think 60 million, 60 to 65 million, in my opinion, will be much more for this guy, because he's too young. He has more to prove in his bag. He's very young, raw at this point of time, and I think he is in the Euro qualifiers. He has not scored a goal yet, but for Atlanta, he is very, very good. He can hold the ball well, and I think Andre Onana and his partnership would be very, very good. Huh? I am very, very looking forward to see how we are cooking in that Premier League against City, or probably the likes of low block teams in which we have to play long balls, like Bournemouth, or probably teams like that, or probably in Europe as well, in the Champions League. So I don't know what would we do, but if there is a chance, Rasmus Hojlund and Andre Onana can be a great partnership for me, as I have told GB. What is GB? I don't know, bro. GB, Gibraltar. I don't know. Probably like it would be what. I cannot see. 1 minute. Just want to see. 1 minute. And oh, I don't know, yaar. I don't know. Acha, UK. Okay, bro. UK. Do subscribe to this channel, please. Thank you so much, bro. You'll get more news about the everything, European transfers as well, and United and Real Madrid transfers as well. Okay, bro. UK. Yes, I'm from UK. Okay. Thank you, bro, for coming on this channel, and do ask more questions if you want to, and do subscribe and like this stream as well. So thank you, bro. And so coming back to the story, that Rasmus Hojlund and Andre Onana story, that they'd be a great partnership. We all know Andre Onana can play long balls as well, and in my opinion, if Rasmus Hojlund I think he's a very, very good attacker. He's a very good central forward, and in my opinion, I think I'm looking forward for him. But a 60, as I said earlier, a 65 million bid for him would not be a very, very good deal for me, because I want to see that 45 to 50 million this deal should be finalized, because there are other players as well. Let's be honest. I know I'm being partially biased over here, because I really want Rasmus Hojlund in United shirts, but let's be honest, there are too many strikers at this point of time who can be great for as a replacement of Rasmus Hojlund, like Jonathan David, who can be very, very good. What has he left to prove? What has he left to prove that he should be a signing in one of the top European clubs? I think he's very, very good. He's also young as well, and I think Ivan Ferguson is another one who's from the Premier League, who's got the Premier League experience as well, and I think he's currently playing in Brighton. I don't know about his story at this point of time, but I think as I read, as far as I know, that he might be in 2024, he might be available, or probably something like that, Ivan Ferguson. But he is also a good
player as well who can be, I think, 45-50 alongside the United tax, and it would be a really, really good deal for me, in my opinion, I think. But Rasmus Hojlund, I am being really, really biased over here because I want Rasmus Hojlund. I've seen his videos as well. I know videos and compilations are not the sole thing which would tell that a player is very, very good. I know the thing that makes me very, very feel satisfied from Rasmus Hojlund is that he's played very good in the Serie A, which is the most defensive league in the world at this point of time. And I think he has done it in there. So I think he can be a good option in UK as well, in the Premier League as well, for playing in United. I think really sorry for the interruption. And so I think he can be a very, very good deal for 45-50 million, but not above that. I think above that would mean that we'll be overpaying, and it would be a United tax ultimately. That seems inevitable, in my opinion, if United want to sign. And I think the first bid would be ultimately a 45 million bid, in my opinion, and United, it would be immediately rejected by Atalanta. And I think it makes sense for me as well, because they value their striker as well above, because every team in this world, every club in the now in Europe wants that the strikers, their players, their raw talents should go for above 60-70. I think if they're super talents, like Jude Bellingham has gone for 105 million. I think there are so many players, like आई थिंक आई नो यार, मतलब मैं भूल गया कुछ नाम लेना, लेकिन जो भी है यंग टैलेंट्स के ऊपर तो यार दे वांट कि यार अच्छे अच्छे मतलब हमें पैसे मिले. एंड क्रिस्टोफर एनकुकू इज अ ग्रेट एग्जांपल. यंग नहीं है, बट ही इज 24, बट he is also 64-70 65 66 70 million, I guess, is a transfer fee for him, in my opinion. So I think Rasmus Hojlund coming to United would improve the United attack. And Rasmus Hojlund, Rashford, Garnacho, Sancho, Anthony, and what do you want more, bro? What do you want? I think United should be balling this season, in my opinion. I don't know. I don't know what would United do in Champions League this season. I think a quarter final would be a very, very good achievement for United at this point, because we all know a quarter final in the Champions League means a lot as well. I think if United can be really, really good, they can do in the semi final. They can go in the semi-finals as well. But United is an unpredictable team. Let's be honest. Come down to earth. United is an unpredictable team, and you don't know when this team switches off. If they want to play in the biggest day, they beat City as well, the way they did at Etihad. No, the way they did at Old Trafford. And if they are not in their mood, they'll be thrashed by Liverpool like 7-0. I think if they are in their mood, they can beat Real Madrid 4-5-0 in the Champions League if they're on their day. And if they don't want to play, and if they're sluggish, lethargic, I think it would mean that they eventually not play well as well. So I think यूनाइटेड को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा. टेन हैग को एक फिलॉसफी बैठानी पड़ेगी विद द लाइक्स ऑफ, एंड ही इज बिल्डिंग दैट communication with Licha Martinez, Lisa, what the hell I'm saying. He's building that connection with Licha, Casemiro, Marcus Rashford, who signed a new contract. I'd be coming on his in the last few minutes as well of this live stream. I'd be coming on him as well. So Marcus Rashford as well, and I think who's the other one? Rafael Varane and Bruno Fernandes. These 4 to 5 people are those, and Tom Heaton is also a name, is also mentioned that he'd be also in the consultancy department with Bruno, to help him guide in his decisions, to help him go well in his decisions as well. So I think this is a very, very good initiative taken by Eric Ten Hag to build a leadership in this United team, because this is the main thing which was missing in the last few years. In the last 7 to 8 years, this was missing. And United dressing room was kind of a leakage, where players used to leak the news out of the dressing room, where players were not united under the name of Manchester United. They were not united. They were playing for themselves. They were playing for their money. I think I'm not going to mention those names, because I want
I don't want to hurt any United fans' sentiments, because they might have those I think they might have those love things for their for those players, which I might mention, because in my opinion those players played more for money than their badge. I think that is the point. So this is a good initiative taken by Erik ten Hag to do this, and I think this would eventually be successful for United in the long term. And in my opinion, if this happens, I think United may be going for a treble as well, Chase. In my opinion, I don't know. I don't know if I'm really a madman. Sometimes I don't know what I am speaking by myself, because I don't have control over my tongue or my brain. So anything comes out of my tongue. So I think this is it. And Marcus Rashford. Let's discuss about Marcus Rashford as well. Marcus Rashford declined a great interest from PSG. I think PSG had a great interest, and many top European clubs would have interest in him, Marcus Rashford, because he's one of the top talents. And let's be honest, he's probably one of the best talents at this point of time in Europe. In England, his redemption arc is memorable. The way he was failing in the 21-22 season, when every United player was failing in that season except Ronaldo and David De Gea, probably. Those two were those which were playing good at least, and Rafael Varane was the best defender for our in that 21-22 season. And I think Marcus Rashford had a pathetic season 2021 and 2022, but he came back in 22-23, and he really showed the world what he has got and his potential as a United Academy graduate. And ultimately, he showed the world with scoring 30 goals. He had a 32 goal season, and it was amazing. It is really amazing that Marcus Rashford, a United graduate, has been given a responsibility under Erik ten Hag as well. He has signed a new contract until 2028, probably 28 or 29, 28. Let's 28. So this is good. He has declined the interest from PSG. PSG were behind him. PSG were offering him very good salary, very good wages as well. And they were looking to wait for the next year as well to make sure that Rashford comes as a free agent, and they might not pay a fee or as well. Or maybe if Mbappe would have left this summer, and they might have pushed for Marcus Rashford if he wouldn't have agreed a new contract. But he has agreed a new contract, and it seems like Marcus Rashford is very happy in Manchester United, and I think we all are happy as well as United fans, because United need those leaders from the academy itself. And if this happens, that Marcus Rashford keeps up his hype, keeps up with his expectations, keeps up with the responsibility, the leadership, I think he'll go down as one of the legends of Manchester United, the way Vaza, the way Ronaldo, the way Vidic, Nani, Scholes, they went as the legends of Manchester United. I think these players will go as well. Him, Bruno Fernandes. I think Casemiro can be one of those players as well. Licha Martinez can be that player who can stay at Manchester United for a long time, and might help United in winning those in getting United to the winning run. Despite the fact Marcus Rashford is here, Garnacho is also here. Garnacho is also our academy product as well. So I think keep an eye on Marcus Alejandro Garnacho as well, because he is one of the superstars for Manchester United in the next few seasons. I think he has got that ability as well. In my opinion, my net is a bit slow at this point because of some issues, and honestly, I think that's it for this video. Or probably we should discuss more. I think Kylian Mbappe's story should be discussed more. Let's be honest, Kylian Mbappe, as I'm wearing a Real Madrid jersey, so I wanted to discuss about Kylian Mbappe as well. So let's be honest. Kylian Mbappe to Real Madrid is, I don't know what would happen. There are so many news regarding this. I think I don't know what to speak about this saga itself, because if I speak, I'm in big trouble. Let's be honest, because things are changing every single moment. Sometimes there's a report that PSG have met with Faisal Lamari, Mbappe's mother. Nasser Khalifi has met with Faisal Lamari, Mbappe's mother, and there are some reports that contradicting this fact that
Kylian Mbappe's mother has never had a meeting with PSG's president Nasser Khalifi. So this denies that. This is one of situation in where nobody knows what's going to happen. It's like in June there's more hype about Mbappe. Mbappe is coming. Mbappe is coming. Mbappe is coming. In July, there is no Mbappe. Mbappe will be joining preseason tour. Mbappe is not there for PSG's preseason. Mbappe will not be joining PSG's preseason tour, and Mbappe will be a Real Madrid player at July 31st. Then on July 31st, when we'll be there, it would be that before the La Liga game starts, Mbappe will be a Real Madrid player. And in the August 31 August, tic-tac, tranquilo, there's nothing. There's Mbappe will be a Real Madrid player next morning for September. When the transfer window ends, Mbappe will be coming next year as a free agent in 2024. So I don't know what the hell is happening in this. Sorry if I use bad words in this, because this might even get cancelled, or probably like I don't have any monetization at this point of time, but this might get cancelled as well. So sorry for that. And I think Mbappe's scenario is that Mbappe needs more. Mbappe needs Real Madrid more than Real Madrid needs Mbappe, because Real Madrid have that formation as well ready with Vinny and Rodrigo in the upfront with a diamond formation, because we have so many midfielders at this point of time. Arda Güler, Bellingham, these are star boys. These are all star boys. This is a team of star boys, and really happy for this team, because after the 4-0 defeat against Manchester City, he really woke up Fiorentino Perez, and eventually decided to sign so many players, and eventually Bellingham came, and there are so many players as well. Kroos and Modric have one more year as well to their belt at Real Madrid this season. I think if they can win one Champions League, they can win a La Liga. I think a treble would eventually be very good for Real Madrid fans, and to really do something for Kroos and Modric. And if they want Kroos and Modric to go down as uh, winning the treble winners, and then retire, or probably go to other clubs if they want to. But Luka Modric will not go, and Kylian Mbappe, I think he needs more. He needs Real Madrid more than Real Madrid needs, because Real Madrid at this point of time are planning without him, because they are waiting. They are just watching the situation. They are not twirling. Mbappe is twirling at this point of time. So I think Real Madrid have the cash ready. Fiorentino Perez, if Mbappe says yes, I'm coming, Perez, take this bag, come to Real Madrid, Habibi. And I think this would happen. But if Mbappe doesn't wants to come, I think there is nothing. And the opposite fan bases should eventually learn this fact as well, that Real Madrid are not twirling for Mbappe at this point. Mbappe is twirling for Real Madrid, and this is the fact. This is really the fact. And if Mbappe doesn't come this summer, I think there's more. I think the way it was last year, that Mbappe's scenario was created last year, it is quite different this year, because in the last year it was Real Madrid who created that chances that Mbappe should come to Real Madrid and will eventually come to Real Madrid. But this summer it is Mbappe who is creating that scenario, who is trying to. I don't know what Mbappe has ambitions for. I think he has got that mindset. I think now, in my opinion, to think that he'll be very good in Real Madrid. He'll be a great player in Real Madrid. And I think one more thing which eventually focuses, you might attract from this point as well, that his competitor Erling Haaland is doing very much. Although he has won a World Cup, he's got so much talent. I know he's got that aura. He's got that ability to score 600, 700 goals in his career. I think uh, if he goes like that, he might even, who knows, he might even break Ronaldo, Messi's record. No way, nobody knows now. I'm being really at this point. I'm a madman, but Mbappe needs Real Madrid because Erling Haaland is on his way for his first ever Ballon d'Or. I think if he beats Messi in this season's Ballon d'Or, I think it would be very decent for Haaland, but not for Mbappe. Mbappe would eventually mean, and the stance with people who eventually have Mbappe as well, they would eventually
think that Haaland is better than Mbappe, because he made a correct decision in his life from moving from Bundesliga to Manchester City, winning the treble with City, being the top scorer in the breaking so many records in his first season in Manchester City, winning the Champions League in Manchester City, and he has won his first ever Ballon d'Or as well. So I think Haaland would be amazing, but Mbappe would be jealous at the same time, that what would I do in my future career, and ultimately it would be Mbappe who will be in the mud at that point of time if Haaland leaves. So I think this is it, and let's hope that we'll be continuing these live streams, live sessions every day, and I'll be doing the live streams at this time at least, because this time is the most suitable for me at night, and it is really really good for me because I'm relaxed, I'm chill, I can talk much about it, and let's be honest. Marcus Rashford, we have discussed Marcus Rashford deal, Marcus Rashford news. Bruno Fernandes is our new captain. Andre Onana to United is a done deal, and honestly, he'll be here. He'll be joining United in the US tour as well. And that's it for this video. I hope for this live stream. I hope you guys have enjoyed this, and uh, those who are seeing us still now, who are with us still now, do subscribe, do like this video, and I hope I can do more live streams in the future as well. So